How are you everyone? Welcome everyone. कैसे हैं आप सब? वेलकम, खुश आमदीद आप सबको कोड विद हाफिज़ के साथ। जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल पे जेंगो DRF की एक सीरीज़ स्टार्ट है और आज का जो हमारा टॉपिक है, बिफोर स्टार्टिंग द DRF सीरीज़ आई वांट टू अंडरस्टैंड यू व्हाट इज़ एन वेब API, because in DRF we are going to use web APIs so many times, so that's why I'm going to first understand what is a web API. So if you are new on this channel, don't forget to subscribe and like, share with your friend. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं चाहता हूँ कि बिफोर स्टार्टिंग Django DRF स्टार्ट करने से पहले Django REST फ्रेमवर्क जो है पॉपुलर है बहुत, मैं चाहता हूँ कि इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वेब API समझा सकूं कि क्या है एन API। वेब API भी एक API है। API स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सो API विच इज़ एन इंटरफेस फॉर वेब इज कॉल्ड एज वेब API। वो इंटरफेस जो वेब के लिए हो उसे हम क्या कहते हैं? वेब API। It may consist of one or more endpoints to define request and response. In Web API, we have one or more endpoints to define request and response. These are the things which we are going to see in our upcoming sessions. What are request and response endpoints in DRF? So, if you are new on this channel, don't forget to subscribe and like. Let's continue. What is a Web API? A Web API is an interface for web is called as Web API. The interface for web is called as Web API. Let me show you with the help of example how Web APIs work. The Web API works first of all the client which the client uses the mobile, and client makes HTTP request to API. This is the Web API to get some data from this web application. Let's say we have a web application which is built in Django, and this web application is interlinked with database to show data with the help of this web API when someone is requesting. So this client makes HTTP request to API. Then API will communicate to web application. This API will communicate, as you see the green arrow, when first of all the client is requesting to get some data from this web app. This will give to the API, request to API, I want some data from this web. Then this API will communicate to web application, and if needed then communicate with database. If a web application need the request is the database, client want to show some data from the database, that time the web application will communicate with database to fulfill the request of the client. I hope this will make sense for you. सबसे पहले क्या होगा, ये एक क्लाइंट है जो कि एक रिक्वेस्ट भेजेगा इस API को, HTTP रिक्वेस्ट करेगा इस API को, फिर ये जो API है वो कम्युनिकेट करेगी इस वेब एप्लीकेशन के साथ, उसे बताएगी कि ये यूज़र डेटा चाहता है। तो जब ये यूज़र की रिक्वायरमेंट समझेगा कि इसको डेटा चाहिए, और डेटा तो डेटाबेस में होता है, तब ये डेटाबेस से वो डेटा लेगा। फिर क्या करेगा, ये आप देख रहे हैं orange arrow, you will see here orange arrow. This is as a response. This is the response of web application to the web API, and then web API to the client. The web application or database provide required data to API. API returns data to client. So in this way the web API works. I hope this will make sense for you. मैं उम्मीद करता हूँ कि इस डायग्राम की मदद से आपको वेब API का जो वर्किंग है वो आपको समझ आ गई होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड। On this channel, Code with Hafiz, we have started the complete series to learn Django. We already covered the Django framework
and we also cover the Python. So let's continue. So here question arises how to use Web API. The question arises here how to use Web API. So as you know, the registration and sign up things on any web, this will be done with the help of an API. As you see, if you visit so many websites, and that time first of all you have to register on the website, then you will sign up, and these things will be done with the help of API. आप अगर कोई वेबसाइट पे जाते हैं तो वो आपको कहते हैं कि इस वेबसाइट पे आप रजिस्टर्ड होंगे, तब जाके आपको इस वेबसाइट के अंदर जो भी चीज़ें आपने चेक करनी है उसकी आपको एक्सेस होगी। तो उसके सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन या साइन अप करनी पड़ती है, फिर उसके बाद लॉगिन करके आप उस वेबसाइट में जा जाते हैं। तो ये जितने भी चीज़ें हैंडल हो रही है तो ये API के थ्रू हैंडल हो रही होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी हाउ टू यूज़ वेब API. So let's understand with the help of diagram. This is the diagram. This will clear your concept and how to use web API. As you see, this API is working for registration and sign up with the help of this API. The API may provide API key for authentication purpose. API जो होती है वो प्रोवाइड करती है API की जो कि ऑथेंटिकेट करती है कि ये यूज़र हमारा है या नहीं। API key or token is just like this, as you see 2, 3, 4, 3 and so on. The API key or token is just like this string, as you see. Whenever you need to communicate with server, make request to API with API key. जब भी आप चाहते हैं कि कम्युनिकेट करें सर्वर से कुछ डेटा लेने के लिए, तब आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करने पड़ेगा API को। देखें API को, और API के पास विद द हेल्प ऑफ API की जब भी आप रिक्वेस्ट करेंगे तो API की मदद से आप API को रिक्वेस्ट करेंगे और फिर ये होगा जस्ट लाइक http://codewithhafiz.com and key, and after key we have this. So this is the API key. If API key authenticates succeed, API will provide required data. जब API key authenticate कर लेती है कि वो API key अगर ठीक है तो फिर आपको जो डेटा चाहिए होता है सर्वर से वो आपको मिल जाता है। तो इस तरह वेब API काम करती है। Let me give you some real world example. As you see the weather API. If you want to build a weather app, you will definitely use a weather API to get real-time weather data. You will need an API key to access the weather data. The API provider tracks usage with the key to ensure fair use and prevent abuse. अगर आपको weather API यूज़ करनी है अपनी ऐप के अंदर, अगर you want to build a weather app, अगर कोई आप weather app बना रहे हैं तो उस केस में आपको weather API यूज़ करनी पड़ेगी। और weather API, to get data from weather API you need an API key. आपको API की चाहिए होगी जिसकी मदद से आप weather data एक्सेस कर सकेंगे, और API की ट्रैक होगी जब भी आप रिक्वेस्ट करेंगे रियल टाइम डेटा वेदर डेटा लेने के लिए। तो API की जो आपको प्रोवाइड करेगा तो वो ट्रैक की जाएगी कि ये API की ठीक भी है या नहीं। Let me give the scenario. The API, you will register for an API key on the provider website, the weather provider website. You will register for an API key on the provider website.